नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूँ प्रांजलि सेठी और हमारे साथ मौजूद है पंजाबी सिनेमा का एक पावर हाउस पंजाबी पूरा ट्रियो यहाँ मौजूद है। द एवर टैलेंटेड तान्या, नीरू बाजवा एंड हमारे राइटर जगदीप सिद्धू जी। पहले ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਨੀਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਯੂਨੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੀਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਰੂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਓਜੀ ਕੁਈਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਰੋਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ? ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਆ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਐਂਡ। ਬਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਲਮ। ਐਂਡ ਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਸੋ ਦੇयर वाज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर मी इन दिस फिल्म। तान्या, आप भी नीरू मैम के साथ पहली बार काम कर रहे हो। Oh, she's the dream girl, you know that. And of course. then everybody just want to work with her, and I'm blessed enough that I got a chance to work with her. And first day when I went to the shoot, I was just looking at her. I was very grateful. I wasn't scared, but I was so mesmerized looking at her. That, oh my god. And I've told this before also, and she's gem of a human being. तो on set किवे जी मस्ती को करती थी? On set na, she made me so comfortable that I can at least perform, which is a very big thing, because she's the Neeru Bajwa, she's star of the cinema, and to get that space to perform is like a real thing. Usually you don't get that with stars, but I'm really happy and really blessed. जगदीप सर, दो लीड एक्ट्रेसेस विदाउट एनी मेल काउंटरपार्ट, किथों आइडिया आया ये वाला? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਵੈਸੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਮੇਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਰੂ ਮੈਮ, your journey from Vancouver to ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ to Mumbai then ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਸੀ? वो स्ट्रगल तो अज भी चल रहा है ऑनेस्टली। सो मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया has made me who I am today. So her experience मेरे लिए I think has been positive and a lesson. ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਸੀ? एक चेंज, एक तो अंदरों एक चेंज सी, असी कल ही गल कर रहे सी कि एक स्विच सी जो कि आई डोंट नो किवें मैं तो नहीं ऑन की, बट आई थिंक पहला मैं बहुत लाइक इनसिक्योर हुंदी सी, थोड़ी डरी हुई हुंदी सी, ਜਿਹੜੇ सोसाइटी ਦੇ डूज एंड डोंट्स आ ਉਹਨੂੰ फॉलो करने आ, ਜਿਹੜੀ रिस्ट्रिक्शंस आ या एक ब्लूप्रिंट जो सोसाइटी ने साडे ਲਈ बनाया है कि इस एज तक आ करना है, इस एज तक you're done, you're an auntie, go sit at home. So ਉਹ I think 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ you've changed, what have you done, there's some other glow, I don't know, एक अलग confidence आया। How sweet. Tanya, in Supna, Yeah. you were being elevated to the level of national crush. Yeah. ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਜਾਂ ਆਡੀਅנס ਫੈਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਸਟੇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ? Every moment is in my heart, because this is something that I always dreamt of. I always wanted to be an actress, and every moment that somebody appreciate me for my work, or someone comes and tell me that, oh my god, we loved your character, we loved your craft, so every single word is here. Even I have the letters that they have given me, I have the flowers that they have given me, I have a box in the house. I take everything and I keep the memories, and then when I'll get old, I'll open and I'll just see everything. ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ओल्ड एक लड़की का जो रोल निभाया था, तो मतलब अभी इस टाइम पे एक मॉडर्न माइंडसेट को फॉलो करते हो, ओल्ड वाली लड़की कहीं पे कहीं है? I think with every passing day ना, actor gets fine in the craft, because उसके खुद भी life experience बहुत बढ़ते हैं,
but this character is like different from all the characters that I've done so far. This is watch the film. This is different. This took so much of my energy, My all the characters before were like little decent, calmer, but this one is like too loud. ਵਾਓ ਨੀਰੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਇਟ অর ਲੀਵ ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅ ਸਰਟਨ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਅਨਹੈਪੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੀ फैमिली जो भी आ, आई लिव लाइफ फ्रीली। यस तानिया, हमारी ना लाइफ में नॉर्मल सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चढ़ाता भी उतनी जल्दी है और उतारता भी उतनी जल्दी है। अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी हुई थी एंड यू नो दैट। तो आप कैसे टैकल करते हो? जैसे आज़ादी मेरा ब्रांड की कंट्रोवर्सी, बट सोशल मीडिया के क्रिटिसिज्म हम कैसे टैकल करते हैं? Some people again started it, and somewhere I feel like we actors have way more work to do. Like 16 hours almost every day on set, and then we are doing dubbing, then we are managing shoot, and then we are promoting the film. So first of all, we have no time to entertain people who are just sitting and speaking their mind out. But if it gets too extreme, I think everybody should take some certain actions, and especially when you are not at fault. But I would just say that people, because social media is good and equally dangerous as well. Exactly. So I think people who are speaking, if they are speaking unknowingly, those who are printing that should also take care equally. Because Spreading it also. yeah, so they are equally at fault if they're not correcting it, or if they're just for views or for fake purposes or just to get fame. तो मुझे लगता है फेम में और बदनाम होने में फ़र्क है। एग्जैक्टली। तो आप किसी को डाउन करके आप व्यूज़ ले रहे हो, that's of no count. और वो भी मतलब कोई भी moral police बन Yes, रहा है आजकल। without any मतलब what? context. Who made you this? And if we come to the controversy, I would just tell you, it really takes heart Yes. to read the comments and see. And sometimes I feel like कि मतलब इतने समझदार लोग हैं, they can just go and check what is right and what is wrong, but चल रहे हैं बस। इस पॉइंट पे एक चीज़ है, think, watch, analyze before stepping into anything. That's very important nowadays. और जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना, माइंड का स्विच स्क्रॉलिंग पे ही लग जाएगा, they'll never be able to make But any decisions. it's very scary also क्योंकि जो society की mindset है Yes. for a female, what they write is like it's shocking कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? मतलब how openly, freely, and it's all men, and it's like, oh my God, are we still stuck there? Yeah. So we have a lot And of work many to do. times this has also happened, that they'll say ki like our culture, Yes. our thing. I'm not talking about only Punjabi, throughout, Yes. that our culture. When you speak something ill about other people, where do you consider culture? Or you're just dragging everything in. So everybody should be little thoughtful before speaking. And if it comes to, we have literally full-time work, emotionally, mentally, we are not in the space to entertain people or whosoever just coming and sitting in front of mouth and saying mic and saying anything. First of all, we don't have time. Exactly. But if they get to nerve, Yes. I think all the actors or all the people should just get together. Yes. That's the True only that. solution I feel. यस ट्रू दैट। नीरू मैम, आप इतने सालों से हो इंडस्ट्री में, पंजाबी इंडस्ट्री में, कैसा लगता है कि कैसे इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री हमारी पंजाबी? इवॉल्व तो बहुत हुई है और हो भी रही है और होगी, एंड वी वेरी मतलब यंग इंडस्ट्री, और जो भी हमारी ग्रोथ हुई है बहुत कम समय में हुई है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਗੀ ਉਹ? गिव अप तो मैं कीता नहीं सी, मे बी जस्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन, इट्स ओके, घबराया ना कर इतनी जल्दी, ਵਧੀਆ सब advice ठीक हो जू। ਜਗਦੀਪ ਸੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ OTT ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਬੈਟਰ ਇਸ पे रिलीज करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे तो लगता है कि जो थिएट्रिकल फिल्में हैं वो अलग रहनी चाहिए और OTT का कंटेंट अलग रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं OTT का जिस तरीके का आजकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है फिल्मों में,
तो वो सिनेमा को ख़राब कर रहा है। सो एक कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म बनती है। जब आप कैलकुलेशन में पड़ जाते हो तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मुझे लगता है दोनों डिफरेंट हो, जैसे आमिर सर ने किया है। द यूट्यूब वाला वाइटी। Yes. यस तान्या, हमने ना अभी रिसेंटली देखा था आपके इंस्टाग्राम पे, फैंस आर सो एक्साइटेड अबाउट दैट। करण औजला के साथ जो आपने पिक्चर डाली है, व्हाट्स इट अबाउट, व्हाट्स कुकिंग, थोड़ा थोड़ा सा दस दो। So Karan is coming with his new album, Yes. and we are beginning together for that. So you will be the part of it. Yes, That's definitely. so cool. So that's the. It's no more suspense, but I guess that's the happy You part. guys didn't leave it to suspense. we never wanted to. We were excited too, more than the fans. We were like, okay, we are coming together after 5 years. Let's post it. So कोई एक सीक्रेट विश होवे एक एक्ट्रेस नाल काम करने, बॉलीवुड एनी की होगी? I really want to share screen with Alia Bhatt. I feel like her craft, her command on her craft, her dialogues, her delivery, her confidence level, and the way she takes acting or her mindset, I think that's different because it's not easy. The role, and I'm literally fan. I'm pretty sure whole India is fan of that Gangubai. In the age that she played it, and the maturity and the versatility that she just portrayed on camera, it's mind blowing. And I Yes, think she's an amazing yeah, actress, I would learn so much. नीरमन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अगर सीक्रेट एक विश होए जब हाले तक पूरी नहीं होई? Say Sanjay Dutt ji. अरे वाह, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ fans ਆ. Yeah. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म। लाइक टाइटल सुनने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। वैसे एक गल होर ते हिंदी, जैसे हिंदी हमारी जो ऑडियंस है ना, उनको ही टाइटल समझाना होए ते कितना तो हमारे समझाओगे? जगदीप जी हाँ, समझाएंगे। he can describe कुछ best. नहीं है। चंट चला के कह लो जी, तो ऐसा। I said you will describe best, and you said ये तो मैं भी कह दूँ। कोई भी खत्म करता है। हाँ, उसमें क्लियर हो गया। चुगलियाँ करने, जो चुगलियाँ बहुत करना। बात इधर की उधर, बहुत शातिर, ओ फफड़े कुछ उन्होंने वो तो hard थी। शातिर लेडीज। There we go. Thank you so much and all Thank the you. very very best for your film। thank you Thank so you, much. thank you. Thank you.